Hey everyone, welcome to the accumulation data analysis for 23rd of May. What a fantastic day we had. The Nifty almost touching 23,000 on the 23rd of May, right? So let's see what happened today, how the data is today after the big up move that we saw. So this was primarily led by the banking stocks. If you look at the banking index, it was up almost 2%, which kind of made the Nifty also move up more than a percent. So we look at the data, we look at the charts, understand where the money is moving and how to play the market in the coming days. So first the India VIX. So India VIX finally touched the target of 24. So after making an inverse head and shoulder, जो मैंने कहा था ना कि whenever an inverse head and shoulder बनता है तो उसका target है कैसे हम arrive at the target is by taking the जो neckline से उसका height रहता है, the head height from the neckline is taken as the target, right? So I'm talking in Hindi because many people requested that we combine both English and Hindi so that they can understand it better. So probably in the coming days also थोड़ा मिक्स करके ही बात करूंगा so that everyone can understand. So the India VIX kind of made a doji, not such a great candle I would say, because many times whenever a doji is formed, जब भी doji बनता है, then usually the particular index or the chart you'll see a little cooling off or reversal happening. Since after an up move we are seeing a doji, अप मूव के बाद डोजी दिख रहा है तो चांसेस आर वहां से कूल ऑफ होके नीचे आ सकता है इंडिया विक्स, राइट? सो कमिंग टू द एफ आई डी आई एक्टिविटी. सो एफ आई एस क्या कर रहे हैं, जो पहले 2000 3000 4000 6000 करोड़ एवरी डे दे वर सेलिंग, राइट? नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट since the last couple of days. If you look at it from the 16th, आज का डेटा अभी बाहर नहीं आया है, बट इफ यू लुक एट द लास्ट 5 सेशंस, क्या कर रहे हैं, उनका जो सेलिंग था that has reduced drastically, and the DII buying जो है it is still around the same level. So that is kind of helping the Nifty move higher. So if you look at the right hand side where you see the percentage change continuously all 5 days since May 16th, today's data is also the same. Today the up move was more than a percent. तो वहां पे आप देख सकते हैं जब इनका सेलिंग कम हुआ है तब कंटिन्यूसली निफ्टी ऊपर गया है, राइट? सो फर्स्ट डे 0.9, फिर 0.3, 0.2, 0.1, 0.3 अगेन, तो आज 1 पॉइंट मोर देन 1%, राइट? तो ये जो डेटा है यहाँ पे सेलिंग जो कम हुआ था, एंड इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट ये क्या कर रहे थे, वहां पे कवर भी कर रहे थे उनका शॉर्ट्स, विच काइंड ऑफ टोल्ड अस दैट there is a decent up move that is coming, which I had even talked about in the previous videos as well, that the Nifty looks like it is going to hit new highs in the coming days, right? तो intraday क्या हुआ है, intraday the minute we started, right, we just kept moving up continuously, right? So higher high, consolidation, again high, consolidation, and we ended almost at the days high, right? Almost touching the 23,000 mark, right? So if you look at the daily chart now, we are in uncharted territory. That is, we have hit all time high today. आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है. यूजुअली वेन एवर दैट इज हिट, द अप मूव वुड बी प्रिटी गुड हियर, बिकॉज जो भी खरीदा है निफ्टी या नहीं तो वॉट एवर स्टॉक्स, राइट, since most of them are hitting new highs, everyone is in profit. So जब भी कोई profit में होता है then usually selling बहुत कम आता है, because there is no one to kind of book it once it reaches their buy price. So since वो resistance नहीं है अभी, it can move up even swiftly from these levels. So the Nifty made an all-time high, almost touching 23,000 today. Looks good for even more gains. यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो पैरेलल चैनल है इट कैन गो अप टू द टॉप ऑफ दिस पैरेलल चैनल. वहां पे वी माइट सी सम पुल बैक कमिंग इन. सो वहां पे डेटा जो बोलता है एंड द कैंडल जो भी हमको बोलता है, बेस्ड ऑन दैट विल टेक अ डिसीजन. बट एज ऑफ नाउ लुक्स गुड फॉर अनदर लेट्स से 200 250 पॉइंट्स, अनदर 1% इन द निफ्टी शुड बी easily achievable as of now. Now coming to the large cap accumulation. So large cap में क्या हुआ है,
today we see a pretty decent up move in the accumulation also. So looks like the DIs, FIs, they kind of bought it, right? Maybe FI selling would have been less, but the DIs have gone out there, bought these large cap stocks and pushed the Nifty higher, which is a pretty good sign, right? So the best performing sector आज का वो है auto sector. So I have been covering the best performance sector. So why I have been covering this is, जब भी कोई sector आता है for the first time, उसके बाद आप देखेंगे even for after let's say 2-3 days again the same sector would be the best performing sector, राइट? तो आप ऑटो का देखेंगे तो शायद 2-3 बार आया होगा, फिर मेटल्स आया था, फिर मेटल्स काफी डिसेंट अप मूव भी दिया है मेटल्स ने. सो दिस टेल्स अस वेयर द मनी इज ऑल्सो मूविंग, राइट? सो ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर, वाई आई काइंड ऑफ शो इट एवरी डे इज ताकि वो वाले स्टॉक्स पे आप ज्यादा फोकस करें, वहां पे अगर अक्यूमुलेशन भी हो रहा है देन दोज वुड बी द बेस्ट स्टॉक्स टू प्ले. So now coming to the bank nifty, like I was telling you, since it has touched the bottom of this parallel channel, high chances that it can also move up to touch the top of the channel. So आज क्या हुआ है, it has risen almost 2% and it has even crossed the middle line of the parallel channel. So जो मिडिल लाइन होता है यूजुअली वो भी थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बट दैट हैज नॉट हैपेंड, इट हैज मूव्ड हायर देन दैट. तो अभी क्या हो सकता है, दिस बैंक निफ्टी कैन इजीली मूव अप टू ऑलमोस्ट टच द ऑल टाइम हाई, और जो 50,000 का यहाँ पे है इट कैन मूव अप टू रीटेस्ट दोज लेवल्स इन द कमिंग डेज, राइट? So this is about the bank nifty. Now coming to the mid cap analysis. So mid caps ने आज क्या किया है, it is kind of a hammer candle. Like I told you yesterday जब मैंने किया था, then I said कि hanging man बना है, which is actually a bearish candle. यहाँ पे थोड़ा consolidation हो सकता है, right? But आज का candle जो है that is a hammer, which is actually a bullish one, but then probably exhaustion हो रहा है यहाँ पे. If you look at what happened in the Nifty and the Bank Nifty and compare it with the mid caps खाली 0.5% ही मूव किया है. And also if you look at the data में there is pretty decent dip in the accumulation, right? So since there is a pretty decent dip in the accumulation in the mid cap stocks, I would rather say that जो अभी कंसोलिडेशन हो सकता है इन द मिड कैप स्टॉक्स, मे बी इट कैन कम बैक टू रीटेस्ट द ब्रेकआउट दैट इट हैड. जो ब्रेकआउट हुआ था पहले वो रीटेस्ट करने आ सकता है, 1-2% कूल ऑफ भी हो सकता है, और लिटिल कंसोलिडेशन. दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी आर सीइंग. एंड ऑल्सो द स्मॉल एंड मिड कैप डिस्ट्रीब्यूशन आज थोड़ा कम हुआ है. So the number of stocks in distribution are on a lower side today, which is a good thing. But what I see is maximum number of stocks जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो मिड कैप्स ही हैं. तो मिड कैप्स में accumulation कम, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा. So that is why I am saying that probably mid caps में थोड़ा consolidation हो सकता है in the coming days, right? Now coming to the small cap data. So the small caps अगेन इट एक्चुअली एंडेड इन द ग्रीन. तो आज ग्रीन में क्लोज हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स 0.19%, बट फिर भी क्यों हमको रेड कैंडल दिख रहा है, बिकॉज वी काइंड ऑफ ओपन हायर. जो ओपनिंग था वो हायर था, क्लोजिंग वो लेवल से थोड़ा कम था, दैट इज वाई द कैंडल इज रेड. बट ओवरऑल जो yesterday का क्लोजिंग था, वी हैव एक्चुअली क्लोज्ड हायर देन दैट, right? And it is again a doji or a spinning top kind of a candle that is formed after a small down pull, right? Looks like the small caps are ready to move higher. So अभी क्या हो सकता है, the focus might shift from the mid caps which is already at new highs, right? Probably 2-3% higher than the new highs, than the last high that it had made. So the focus can shift to small caps now. Why I'm saying that is, if you look at the data, it has actually improved. While the mid cap data has kind of gone down, the small cap data has actually improved. तो यहाँ से हमको लगता है कि the small caps should do much better than the mid caps in the coming days, right? Probably small cap stocks can attempt one more all-time high and probably even cross that. Hopefully this helps. I'll see you again
in another video tomorrow after the day's closing. So in short, what you do is large caps look really well, small caps also look really well, mid caps you would want to book some profit off and take some money off the table in the mid cap stocks. Thank you.